Hello everyone. Okay, let's start today's class in a few minutes. I think I am live on YouTube. You can watch this lecture on the Melvano channel of Melvano Physics of YouTube. On YouTube, yeah, you can watch this lecture on the Melvano channel of Melvano Physics. Yeah, you can watch this lecture on the Melvano channel of Melvano Physics. So, in the last class, we have discussed basically we are in the mid of SHM. We are in the mid of SHM. हम लोग SHM पढ़ रहे थे and this is the fourth lecture of SHM. This is the fourth lecture of SHM. In lecture number 1, we have discussed the basic concepts of SHM. SHM क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है. In the second lecture, we have done somewhat research in SHM, right? Spring block system we have done, and in this third and many more things we have done. In this lecture number 3, we have talked about last point. If you can see in lecture number 3, we have already done that if two blocks m1 m2 of two blocks, if they are connected and they are performing SHM, their time period can be written as time period of this SHM can be written as 2 pi under root mu upon k, where this mu is, what is this mu, where this mu is, I think you are knowing about this mu. This is reduced mass. This is reduced mass. ठीक है, where reduced mass mu is equals to m1 m2 divided by m1 plus m2, m1 m2 divided by m1 plus m2. Okay, cool. So this we have done, this also we have done. अगर वर्टिकल हमने हैंग कर दिया है, अगर वर्टिकल हमने हैंग कर दिया है स्प्रिंग को, ठीक है, विथ सम मास m, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 pi under root m by k, where k is the spring constant, and the last one is when this particle, there is two mass particle m1 m2 and this is doing SHM, और ये यहाँ से लिफ्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोला था टाइम पीरियड इज रिटन बाय 2 pi under root m1 upon k. यहाँ पे जो मास SHM कर रहा है उस मास को हमने फॉर्मूले में रख दिया. So in today's lecture, that is lecture number 4 of SHM, this is lecture number 4 of SHM, we are going to talk about we are going to talk about various, ओके स्प्रिंग, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम है. So various combination of spring, various arrangements of spring. First what we have to do, we have to various arrangements in spring, and the first arrangement is series combination of spring. Series combination of spring. What is this series combination? In series combination, what we can say that we have different spring. Suppose this is your first spring and this one is, I'm just drawing with a different color, this is your second spring. Spring constant of this is suppose K2 and this spring constant is K1. When we are connecting them in series, अगर हम लोग उसको series में consider कर रहे हैं, yeah, my voice is audible to all. I am live on YouTube channel of Melvano Physics. You can watch this lecture. Now in this series combination में क्या होता है इसको जान लेते हैं. What is happening in series combination? In series combination, same restoring force exerts in all the spring, but extension will be different. Yes, ये बात याद रखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सेम रीस्टोरिंग फोर्स exerts,
सेम रिस्टोरिंग फोर्स, एक ही रिस्टोरिंग फोर्स सारे स्प्रिंग में लगता है। एक ही रिस्टोरिंग फोर्स, जो आप रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जो एक स्प्रिंग में लगेगा वही दूसरे स्प्रिंग में लगेगा, वही तीसरे स्प्रिंग में लगेगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी सेम इन ऑल स्ट्रिंग्स, but the extension but the extensions will be different in different types of springs. So basically there is a graph, or you can say this is the diagram for series combination. These two, this is also a series combination and this is also a series combination. Okay, both is the series combination. And when we are talking about series combination, so what will happen in series combination? In series combination, again I am saying the restoring force will be same. Restoring force will be same in both the springs. Here only two spring is there, that's why I am saying in both the two spring. Okay, so let us suppose this extension in this spring, why this is spring, this spring constant is k1. Let us take the extension in this is x1. Similarly the extension in this is x2. So what will be the total extension? What will be the total extension in this spring? So total extension in this spring, x will be equals to x1 plus x2. Total extension in the spring will be equals to x1 plus x2. let's talk about let's talk about the forces acting on the spring. अगर आपने restoring force, अगर force लगाया है F, suppose this force is F, तो restoring force क्या होगा? restoring force दोनों में series combination है, so the restoring force will be same. And what will be that restoring force? Restoring force will be same. ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? सेम. तो रिस्टोरिंग फोर्स लिखा मैंने k1, इस पे एक्सटेंशन कितना? x1. तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी माइनस k1 x1, और यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? दोनों में मैंने फोर्स लिख दिया, और ये बात बार बार कह रहा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स सीरीज में क्या होगा? सीरीज में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो सेम होगा. सो दिस विल बी k1 x1. यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा k1 x1 नेगेटिव साइड. इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है मैंने, that will be k2 x2, and both of them will be equal. Why they will be equal? Because the springs are in series. Okay, चलिए let's move further. So तो हमने क्या कहा? जो रिस्टोरिंग फोर्स F है, that is same, that is k1 x1 in the first spring, which is equals to minus of k2 x2 in the second spring. ठीक है, and the total extension in the spring has already been written as x1 plus x2. ठीक है, अगर आपने ये सेम रखा है x1 x2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, तो यहां से जो x1 की वैल्यू आएगी, दैट विल बी माइनस f डिवाइडेड बाय k1, एंड सिमिलरली x2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस f डिवाइडेड बाय k2. ठीक है, सो व्हाट विल बी द टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग? Total extension in the spring means total extension in the combination, that x will be equals to minus of x1 की जगह रख देंगे minus f upon k1 plus minus f upon k2. माइनस साइन कैन बी टेकन इसको बाहर निकाल लीजिए. इट विल बी f upon k1 and it will be f upon k2. हो गया ये? नाउ अब मैंने क्या कहा, अब ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए कॉम्बिनेशन हमने किसका लिया था? दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन लिया था. वी हैव टेकन कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स. इस पे एक्सटेंशन x1, इस पे एक्सटेंशन x2 था.
नाउ हमने क्या किया इन, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इट वाज K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इट इज K2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके एक स्प्रिंग बना दिया। यस, एक स्प्रिंग बना दिया, सेम कॉम्बिनेशन। अब इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो दोनों का सम होगा, दैट विल बी x1 x2, सम ऑफ x1। अब इसका जो कांस्टेंट आ रहा है, आई एम राइटिंग बाय ks से इसलिए यहाँ लिखा है बिकॉज दे स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सो what will be the restoring force, in this spring? It will be equals to minus k s मतलब क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन इनटू एक्सटेंशन s। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय k इन सीरीज। Finally we got it. What we got, x is equals to x1 plus x2, x is equals to x1 plus x2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x की जगह रख सकते हैं हम लोग, दैट इज f डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट कहते हैं, या फिर इक्विवेलेंट constant when these springs are in series is equals to minus f upon k1 minus f upon k2। f यहां से कैंसिल हो सकता है, माइनस साइन सारे क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा दैट इज 1 अपॉन k इक्विवेलेंट, किस में लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इन सीरीज, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो दो स्प्रिंग या फिर दो स्प्रिंग से ज्यादा, इट कैन बी मोर देन 2 स्प्रिंग्स। If there is 2 springs or more than 2 springs, the spring constant of the combination, series combination, will be equal to 1 upon k equivalent or 1 upon k in series is equals to 1 upon k1 plus 1 upon k2। और यहां से आप फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। What is the final answer? K in series, it will be equals to, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा k1 k2, नीचे आ जाएगा इट विल बी k1 प्लस k1 k2 divided by k1 plus k2। This formula is used when the springs are in series, जब स्प्रिंग सीरीज में होंगे तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे k1 k2 डिवाइडेड बाय k2। बेसिकली ये पैरेलल का फॉर्मूला है, कहां पे, जब आप रेजिस्टर्स, when the resistors are connected in parallel, ठीक है, when resistors are connected in parallel, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे। अब यही फॉर्मूला सीरीज के केस में यूज करेंगे, किसके सीरीज के लिए, स्प्रिंग के सीरीज के लिए। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम लोग। नाउ सिंस वी गॉट इट, द k की वैल्यू हमें मालूम चल गई, यहाँ पे जो k इक्विवेलेंट आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट इज k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 तो टाइम पीरियड अगर निकालना है, एसएचएम कर रहा है, दो स्प्रिंग साथ में लगाया सीरीज में, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बेसिक होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। अब इस k की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज ks। why ks? because they are connected in series, ठीक है। नेक्स्ट
Let's talk about time period is known to you. Frequency. Frequency is basically 1 upon time period. Frequency is 1 upon time period. यहाँ पे frequency n से भी लिखा हो. Frequency is equals to 1 upon time period. It will be equals to 1 upon time period. It means it will be 1 upon 2 pi under root k s divided by m when it is series combination. When it is series combination. ठीक है. Omega. Angular frequency can be written as angular frequency is 2 pi f. Angular frequency is 2 pi f. तो it will be in 2 pi into f is the frequency. और यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा 1 upon 2 pi under root k spring divided by m. यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 pi कैंसिल हो गया. ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के स्प्रिंग का जो आया सीरीज में डिवाइडेड बाई m. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको अगर आपने के इक्विवेलेंट निकाल लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन. अब इसी में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या बताएगा. ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा. इन सीरीज कॉम्बिनेशन रीस्टोरिंग फोर्स इन बोथ द स्प्रिंग्स आर सेम, और या फिर जितने भी स्प्रिंग सीरीज में रखे हैं रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, सेम होगा. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट ऑन ईच स्प्रिंग इज सेम. डिस्प्लेसमेंट ऑन ईच स्प्रिंग इज सेम. ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन ईच स्प्रिंग इज सेम बट रीस्टोरिंग फोर्स इज डिफरेंट. पैरेलल में रीस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो सेम होगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है. दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों, इसमें जो एक्सटेंशन अगर x है तो इस स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन क्या होगा, सेम होगा. तो डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, सेम होगा. डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, सेम होगा. बट देयर रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डिफरेंट. व्हाई देयर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, तो यहाँ पे होगा इट विल बी k1x और यहाँ पे क्या होगा k2x. तो स्प्रिंग फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में डिफरेंट होगा, दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट होगा. तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है. ना देखिए, यहाँ पे कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे कि आपको पता लग पाए, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है और कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ना यहाँ पे देखिए, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ. अगर स्प्रिंग डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हैं, दो स्प्रिंग डायरेक्टली ऐसे जुड़े हुए हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. इसके अलावा ये सारे जो यहाँ पे दिखे दे रहे हैं फिगर, दिस ऑल आर पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये सारे क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. तो restoring force, now the restoring force will be different, and if the restoring force will different, the net force will be equals to F1 plus F2. सो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा, F1. यहाँ पे क्या लिखे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के. डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो दोनों स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, x का होगा. इट विल बी माइनस k k1x एंड माइनस k2x. x डिस्प्लेसमेंट हुआ, k1 k2 क्या है, दोनों में अलग अलग कांस्टेंट है, दोनों में अलग अलग कांस्टेंट है.
Okay, so what restoring force can be written as? You can take x common. You can take x common. ठीक है, so it will be minus sign बाहर लिया, it will be k1 plus k2 into x. k1 plus k2 into x. फीलिंग स्लिपी। ना, यहाँ पे दो स्प्रिंग था और ये दोनों स्प्रिंग क्या था, पैरेलल में था। ठीक है, दिस वॉज k1, दिस वॉज k2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस करके, आफ्टर रिप्लेसिंग दीज टू, वी आर गोइंग टू टेक ओनली वन स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने kp लिखा। व्हाई आई एम राइटिंग kp, व्हाई आई एम राइटिंग kp, बिकॉज दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x होने वाला है। सो व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस? रिस्टोरिंग फोर्स हमें मालूम है, रिस्टोरिंग फोर्स जो F होगा दैट विल बी माइनस के एक्स, तो K पैरेलल इनटू x, x सेम रहने वाला है, और F इज इक्वल्स टू, we know that F restoring force F will be equals to F1 plus F2. So this F will be equals to minus kp into x is equals to f1 की जगह इसमें k1 एक्सटेंशन है, it will be minus k1 into x, it will be minus k2 into x, x क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो यहां से kp it will be equals to k1 plus k2, kp will be equals to k1 plus k2. So here we are, हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का भी फॉर्मूला डिराइव कर दिए। सो व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, जब स्प्रिंग पैरेलल होगा, जब भी स्प्रिंग पैरेलल होगा, तो के इक्विवेलेंट यहाँ पे, वहां पे केपी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपल सीरीज ऑफ रेजिस्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में आप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मींस k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k, ये सीरीज का हो गया, ये पैरेलल का हो गया। सीरीज पैरेलल कैसे डिफाइन होगा, दिस, अगर स्प्रिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, इफ द स्प्रिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर, तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर ऐसे कनेक्टेड है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड अगर इस केस में लिखना है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, यहाँ पे k इक्विवेलेंट रख दीजिए, k इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 दैट इज रिटन एज kp, दैट इज रिटन एज kp। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई f, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई f, यहां से आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नोट, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें लिखे रहते हैं व्हाट इज रिटन हियर, इसमें लिखा रहता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। Now, if the length of the spring is made n times, नोट करेंगे इसको, इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज मेड n टाइम्स, अगर हम स्प्रिंग का जो लेंथ है वो n टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, देन द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट मतलब हुआ k, हमारा जो फोर्स कांस्टेंट है दैट इज k, ठीक है। ओके, तो फोर्स कांस्टेंट बिकम्स 1 अपॉन n टाइम्स एंड द टाइम पीरियड बिकम्स रूट n टाइम्स। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपका स्प्रिंग लेंथ n टाइम्स हो जा रहा है, अगर आप स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का लेंथ ऑफ दिस, पहले लेंथ का स्प्रिंग का कितना था l, अगर आपने nl कर दिया स्प्रिंग,
तो जो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा वो k बाई एन हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट इज रूट एन टाइम्स हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बी, इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, अगर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k, if a spring of spring constant k is divided into n equal parts, n equal k, if a spring constant of a if a spring constant k is divided into n equal part, the spring constant of each part becomes nk and the time period becomes 1 by root n times। देखिए ये चीजें डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। डायरेक्ट मतलब इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज डिवाइडेड इनटू n k पार्ट्स, स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर आपने डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में k1 k2 k3 ऐड करके जिससे k मिल जाए, तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो n टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। जितना छोटा स्प्रिंग हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। एंड द टाइम पीरियड, और जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 1 अपॉन रूट एन टाइम्स, टाइम पीरियड विल बी 1 अपॉन रूट एन टाइम्स। यहाँ पे रूट एन टाइम्स हो गया था, यहाँ 1 अपॉन रूट एन टाइम्स हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग द टाइम पीरियड, लोडेड स्प्रिंग मतलब मास कोई होगा वहां पे ऐसा कुछ, in case of a loaded spring, the time period becomes out to be same in both horizontal and vertical arrangements of a spring. Very good. बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। What in case of loaded spring? Loaded spring मतलब अगर ये spring है horizontal हो गया, यहाँ पे मास m है, इसी तरह ये spring हो गया vertical हो गया, इसका मास क्या है m। दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट के यहाँ पे जो मास है m, यहाँ पे भी जो मास है m। तो अगर ऐसा हो रहा है whether it is horizontal or it is vertical, इनका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। टाइम पीरियड सेम होगा, टाइम पीरियड विल बी सेम in horizontal as well as vertical positions। ठीक है, now next, the force constant k of a stiffer spring is higher than that of a soft spring। अगर स्प्रिंग क्या है स्टिफर मतलब बहुत टाइट है, बहुत मतलब क्या हुआ उसमें ज्यादा इलोंगेशन, मतलब बहुत उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है या फिर छोटा है, उसको बोल रहे हैं स्टिफर हम लोग कह रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर स्टिफर स्प्रिंग है, इफ द स्टिफर स्प्रिंग इज देयर देन इसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो ज्यादा होगा एक सॉफ्ट स्प्रिंग से। सॉफ्ट स्प्रिंग से फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। So the time period of a stiffer spring is less than the time period of, time period का फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो स्टिफर स्प्रिंग का k क्या होगा, यहां से आप देख सकते हैं इन केस ऑफ स्टिफर स्प्रिंग k की वैल्यू क्या होगी, अगर ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। k की वैल्यू कम है सॉफ्ट के केस में, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ स्टिफर स्प्रिंग इज लेस देन अ सॉफ्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट we have a question here, we have a question here। Now one body is suspended from a spring of length L
स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका दिया है k एंड हैज अ टाइम पीरियड t। मतलब एक बॉडी है दैट इज सस्पेंडेड, अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, a body is suspended from a spring of length L. Okay, and इसका spring constant है k. Now the time period is also given to you t. Now if the spring is divided into two equal parts, अगर हमने इस spring को divide कर दिया two equal part में, it means we have divided this into two equal part, that is यहाँ पे आ जाएगा L by 2, ठीक है, equal part which are joined in parallel, पैरेलल में ज्वाइन किया L/2 करके, और दोनों को फिर से हमने सेम मास से कंबाइन कर दिया। ये क्वेश्चन दिया है, ज्वाइन पैरेलल इन पैरेलल एंड द सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, देन डिटरमाइन द न्यू टाइम पीरियड। न्यू टाइम पीरियड क्या होगा वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, अब हमने क्या किया, लेंथ आधा कर दिया। अगर आपने लेंथ आधा कर दिया तो लेंथ आधा करने से क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है कि लेंथ आधा करने से, लेंथ को डिक्रीज करने से जो नया के हो जाएगा वो 2k हो जाएगा। एंड सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो के पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2k plus 2k, it will be equals to 4k. So time period, new time period will be, time period का नया फॉर्मूला that will be 2 pi under root m by k, और यहाँ पे k की जगह आपने लिखा है 4, ठीक है। और पहले टाइम पीरियड कितना था t, और पहले जो टाइम पीरियड t था that is 2 pi under root m upon k। तो कैसे रिलेशन लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। So what is t dash divided by t will be equals to t dash divided by t, t dash की जगह रखेंगे under root m by 4k divided by under root m divided by k। So यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से t dash divided by t, अंडर रूट m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक यू विल गेट टू 1/2। सो यहां से t डैश जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा दैट विल बी t डिवाइडेड बाई 2, जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा दैट विल बी t डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इज हियर, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। A block of mass m is on a horizontal slab of mass capital M। एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, इट इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्लैब जिसका मास इज कैपिटल M, which is moving horizontally and executing SHM। हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और SHM हो रहा है। The coefficient of static friction between the block and the slab, the coefficient of static friction between the block and the slab is mu. If the block is not separated from the slab, if the block is not separated from the slab, then determine angular frequency of oscillation, then determine angular frequency of oscillation, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिटरमाइन करना है, हमें पता लगाना है, ठीक है। लेट्स डू दिस। ये हमारा फिगर, इफ द ब्लॉक, यहाँ पे देखिए दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक क्या है कैपिटल M है, एक ब्लॉक है स्मॉल m। दिस इज कैपिटल M और ये है स्मॉल m। अब क्या कह रहा है, ये SHM कर रहा है और ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट सेपरेटिंग। If the block is not separated from slab, then restoring force due to SHM
should be less than frictional force between the slab and the block. ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब जो स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन से कम है। अगर वो फ्रिक्शन से कम रहेगा तभी तो वो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये कंडीशन लगा देंगे और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू। सो यहाँ पे आपने लिखा रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी लेस देन, रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो सकता है, नेट फोर्स, जिस तरह हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रीस्टोरिंग फोर्स हो सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा इस स्प्रिंग में, दैट शुड बी लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं म्यू इनटू एन से, म्यू इनटू एन से, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग देयर, रीस्टोरिंग फोर्स m into a max should be less than mu mg. So here a max, maximum acceleration should be less than mu mg. Maximum acceleration SHM के फॉर्म में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। सो व्हाट यू कैन राइट, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी। यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी, that will be m should, omega should be less than or equal to under root mu g divided by a, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, नाउ वी आर हियर विद द सिंपल पेंडुलम कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट इज दिस सिंपल पेंडुलम, लेट्स डू दिस, ओके। If a point, if what is simple pendulum, first of all let's talk about what is pendulum. Simple pendulum, how does it operate, कैसे ये काम करता है। If a heavy point mass is suspended, if a heavy point mass is suspended by a weightless, inextensible and flexible, perfectly flexible string from a rigid support, then this arrangement is called simple pendulum. Simple pendulum क्या कहता है कि अगर एक रस्सी से which is perfectly, यहाँ पे inextensible, perfectly flexible string से अगर आपने एक heavy mass point mass लगा रखा है, this arrangement is known as, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम का हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंबल। नेक्स्ट, expression for time period, this is your simple pendulum and we are going to calculate the time period of this simple pendulum. Method 1 is saying that for a small angular displacement, sin theta can be easily written as theta. For smaller angular displacement, sin theta को हम लोग generally theta से लिखते हैं। When theta is small, when theta is small, ये चीज तो हमें मालूम है, ठीक है। Theta is, when this theta is small, then what we can do, the sin theta can be easily written as theta. So this is the arrangement of a simple pendulum. This is the arrangement of a simple pendulum. This is the mass. This is the length. ठीक है। अब यहाँ पे जब ये एक्सएचएम करेगा तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज टी, यहाँ पे टी है, दिस लेंथ इज एल। नाउ यहाँ पे जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा दैट डाउनवर्ड फोर्स विल बी mg. This angle, suppose this angle is theta, so this angle is also theta, so the component here it will be mg cos theta and here the component is mg sin theta.
Okay, so this tension will be balancing this mg cos theta component, and this mg sin theta is the restoring force which is bringing this pendulum again to its mean position, mean and extreme position. Okay, so what we have to do here now? Now what we can do, this force, that is net restoring force, is equals to minus of mg into sine theta, minus of mg into sine theta. When theta is small, this force can also be written minus mg into theta. Okay. Now what is sine theta? अगर आप इस ट्राइंगल में sin theta लिख लें, okay, what is this sine theta? Sine theta will be, this angle is theta, this angle is theta, this is the right angle, approx this is right angle. Sine theta will be equals to perpendicular upon hypotenuse. So what I am trying to write, that is theta is equals to y by L. Theta is equals to y by L. So the restoring force acting here, the restoring force acting can be written as F is equals to minus mg. Theta की जगह what we can write, y by L. Y by L. So we have a constant here. What is this constant? Mg is, m is constant, g is constant, L is constant. So what I am going to write, this k constant is equals to mg by L. This k constant is equals to mg by L. So the restoring force acting will be equals to minus k, that is mg into y. दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, जहां पे k की वैल्यू कितनी आ गई, mg by L. और यहां से अगर आपने k निकाला तो टाइम पीरियड निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. तो यहां से आप लिख सकते हैं इसका टाइम पीरियड विच इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m divided by k, and k can be written as mg by L. L ऊपर चला गया तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है. What can be cancel out? m कैंसिल आया तो यहाँ से टाइम पीरियड प्रूफ हो गया. सिंपल पेंडुलम का the time period is under root 2 pi under root L upon G. The time period of a simple pendulum is 2 pi under root L upon G. Okay. Any problem in this? No problem. Thus, the time period of simple pendulum can be written by this formula. ठीक है, that is 2 pi under root m upon k, that is 2 pi under root m upon k. So here the time period is 2 pi under root m upon k. K की जगह आपने वैल्यू रख दिया mg upon L. So time period of a simple pendulum is equals to 2 pi under root L upon G. Time period of simple pendulum is equals to 2 pi under root L upon G. Cool. Okay. Now, one more method is there to find the time period. इस मेथड से भी टाइम पीरियड आ सकता है हमारा. So the time period of simple pendulum का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे हमने डिराइव कर दिया, that is 2 pi under root L upon G. 2 pi under root L upon G. That is the time period of a simple pendulum. That is the time period of a simple pendulum. Next, second method of time period calculation of a simple pendulum we will be doing in next class. Right now it is not well, I'm
not well, we will be continuing in the next class from the second method of torque. Torque method, this is also used to find the time period of a simple pendulum, that is 2 pi under root L upon G. We will be doing in the next class. Till then, goodbye, have a good day.